Hello everyone, welcome to my channel. So today we will talk about the remaining part of the mineral nutrition. This is a very important chapter, and yesterday we have done up to yesterday we have discussed about the criteria, the three main criteria that are useful to identify the essential elements in plants. So based upon the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism. These elements are further divided into two broad categories based on the quantitative requirement. Qualitative or quantitative requirements. First is macronutrients and second is micronutrients. So based upon the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism. These elements are further divided into two broad categories based on their quantitative requirement. One is macronutrients, other is micronutrients. So criteria for essentiality: the elements must be absolutely necessary for for supporting normal growth and reproduction. That is, in the absence of the element, the plant do not complete the life cycle or set the seeds. The second criteria is the requirement of the element must be specific and not replaceable by any other element. In other words, deficiency of any one element cannot be replaced by supplying some other element. The third criteria: the element must be absolutely directly involved in the metabolism of the plant. So these are the three criteria that are define the essential elements. So whoever element fulfill all these three criteria, they are called essential elements. So based upon the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism. See, we have found 60 elements out of 105 discovered are found in different plants. Gold is also found, selenium is also found, strontium, radioactive strontium is also found. The plants which are growing near the nuclear power plants. So based on these three criteria, we have found the few elements that have been absolutely necessary, absolutely essential for plant growth and metabolism. These elements are further divided into two broad categories based on the quantitative requirement. The first one is called macronutrients, required in large quantities, and micronutrients, required in less quantities. Macronutrients are generally present in plant tissues in large amounts. Macronutrients are present in plant tissues in generally large amount. So macronutrients are generally present in plant tissues in large amounts in excess of 10 millimole per kg of dry matter. In excess of 10 millimole per kg of dry matter. The macronutrients include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium. Of these, carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained from carbon dioxide and water, while the others are absorbed from soil as mineral nutrients. So how to remember these macro elements? There is a very funny trick. We'll discuss it. So let's see micronutrients or trace elements. So micronutrients are also called trace elements. Sometimes in the question they give micronutrients are also identify the incorrect statement about micronutrients. First option, they are called tracer elements. Second option, they are required in very small amounts. Third option, less than 10 millimole per kg of dry matter. Fourth option, iron is a micronutrient. So first option is wrong because micronutrients are trace elements, not tracer elements. Tracer elements are radioactive elements, but micronutrients are trace elements because they are required in small amounts. They are required in very small amounts, less than 10 millimole per kg of dry matter. These include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. In addition of the 17 essential elements, so these macro and micro, there are 9 macronutrients, that is CHON, Ca, Mg, phosphorus, sulfur, potassium. Micronutrients are also called trace elements, are needed in very small amounts, less than 10 millimole per kg of dry matter. These include iron, manganese, copper, molybdenum,
zinc, boron, chlorine, nickel. So these are the 17 essential elements. 9 are macro and 8 are micro. So macro are more, 9, and micro is 8. So in addition to the 17 essential elements named above, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt, and selenium. They are required by higher plants. So in addition to the 17 essential elements named above, there are some beneficial elements such as sodium, silicon, cobalt, and selenium. They are required by higher plants. For sodium, silicon, cobalt, selenium. So in questions and multiple choice questions, they give you identify essential elements, or identify macronutrients among these, identify micronutrients among this, identify non-mineral macronutrients, identify mineral macronutrients. So this is very important, and at the end of the video, I will give you a trick to remember all these macro, micro, essential elements and non-essential or beneficial elements. So keep watching, keep listening. Essential elements can also be grouped into 4 broad categories on the basis of their diverse functions. These categories are 4 broad categories on the basis of diverse functions. These categories are essential elements as components of biomolecules and hence structural elements of cells. Example: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Essential elements can also be grouped into 4 broad categories on the basis of their diverse functions. On the basis of their functions, we have categorized them into 4 broad categories. So these categories are: first is essential elements as components of biomolecules, and hence the structural So essential elements can also be grouped into 4 broad categories on the basis of the diverse functions. These categories are essential elements as compounds. वो कैसे काम करते हैं वो हिसाब से हमने क्या किया है, इसको 4 कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स हैं. एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स, जो सेल को बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं. जैसे वॉल कैसे बनता है? ब्रिक से बनता है, तो ब्रिक आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. सिमिलरली सेल कैसे बनता है? उसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है? उसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. एसेंशियल एलिमेंट्स एज components of biomolecules एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो ये तो होते ही होते हैं किसी भी सेल, कोई भी सेल है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता ही होता है. CHON होता ही होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सो दीज आर कॉल्ड there are components of biomolecules and structural elements of cells. Second है essential element that are components of energy related chemical compounds in plants. So essential elements that are components of energy related chemical compounds in plants. सो ये चैप्टर का हर पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है. यू कैन गेन और लूज योर विश. So essential elements that are components of energy related chemical compounds in plants. Example: magnesium in chlorophyll and phosphorus in ATP. So essential elements that are components of energy related chemical compounds in plants. So ऐसे essential elements जो energy related chemical compounds के components हैं, जैसे कि magnesium in chlorophyll. Chlorophyll is involved in photosynthesis and this chlorophyll is formed from magnesium. If in chlorophyll, see, chlorophyll has one molecule of chlorophyll has a single magnesium, and without this magnesium chlorophyll molecule cannot exist. So this magnesium is very, very important. So chlorophyll is having magnesium as component, okay, and phosphorus in ATP. So ATP is a energy related chemical compound. It is having phosphorus. Essential element phosphorus. Phosphorus is macro or macro. Essential element that activate or inhibit enzymes. For example, Mg+2 is an activator for both ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase.
essential elements that activate or inhibit enzymes. So ऐसे essential elements जो enzymes को activate करते हैं या inhibit करते हैं. For example, जो Mg+2 है, it is an activator for both RUBP, that is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, and phosphoenol pyruvate carboxylase PEPcase. पेपकेस फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे. सो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये दो एंजाइम्स के एक्टिवेटर हैं Mg+2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. RUBP को कौन एक्टिवेट करता है? रुबिस्को को. RUBP मीन्स रुबिस्को को कौन एक्टिवेट करता है? Mg+2. पेपकेस को कौन करता है? Mg+2. सो Mg+2 ये दो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. दो भी एंजाइम्स अगर देखें आप तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं. रिबुलस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. सो ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन. सो बोथ ऑफ देम आर क्रिटिकल एंजाइम्स इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन. मतलब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम ये दो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड ये एंजाइम्स तभी एक्टिवेट होंगे जब Mg+2 आयन इनके पास आएगा. सो Mg+2 आयन एक्टिवेट करता है रुबिस्को को एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज पेपकेस एंजाइम को. सो दो एंजाइम्स Mg+2 एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट से एक्टिवेट होते हैं. सो दीज एसेंशियल एलिमेंट Mg+2 एक्टिवेट्स रुबिस्को एंड पेपकेस, रेबुलस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. ये दो एंजाइम्स को Mg+2 एक्टिवेट करता है. इतने बार बोल दिया, अब तो याद ही हो गया होगा. Zn+2 इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. तो अल्कोहल, तो जो भी ना अल्कोहल पीते हैं उनको जिद लग जाती है. अल्कोहल पीने की जिद लग जाती है. सो दे गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल. जैसे वी आर एडिक्टेड टू फोन्स, अब मोबाइल फोन. सो पीपल हु टेक अल्कोहल दे गेट एडिक्टेड टू इट. तो जिद लग जाती है. जिंक. सो जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. तो जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. सो Zn+2, सो उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि Zn+2 इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है ना, उसको कौन एक्टिवेट करता है? Zn+2 एक्टिवेट करता है ना. एंड मोलिब्डेनम एंड MO ऑफ नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. सो जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है तो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है नाइट्रोजनेज, उसको कौन एक्टिवेट करता है? MO मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करते. तो मेटाबॉलिज्म मोलिब्डेनम. सो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? नाइट्रोजनेज को कौन एक्टिवेट करता है? मोलिब्डेनम एक्टिवेट्स नाइट्रोजनेज. और नाइट्रेट रिडक्टेज को भी मोलिब्डेनम एक्टिवेट करता है. सो दो एंजाइम्स हैं, नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज. Can you name a few more elements that fall in this category? For this, you will need to recollect some of the biochemical pathways you have studied earlier. So, once we revise, ये जो है ना Mg+2 किसको एक्टिवेट करते हैं? रुबिस्को एंड पेपकेस. सो both these enzymes, both of which are critical enzymes in photosynthetic carbon fixation. और जो अल्कोहल पीते हैं उनको कहते हैं जिद लग जाती है. तो जिंक किसको एक्टिवेट करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को जिंक एक्टिवेट करता है. और मोलिब्डेनम किसको? नाइट्रोजनेज विच इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रेट रिडक्टेज को भी एक्टिवेट करता है. सो these essential elements like Mg+2, Zn+2, MO, molybdenum, so this activates enzymes, right? Which enzymes? Rubisko, pepcase by Mg+2 and alcohol dehydrogenase by Zn+2. And MO, molybdenum, activates nitrogenase and nitrate reductase. Okay. Some essential elements can alter the osmotic potential of a cell. Potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. Some essential elements can alter the osmotic potential of a cell. So some essential elements होते हैं that can alter the osmotic potential of a cell. Some essential elements can alter the osmotic potential of a cell. So some essential elements वो osmotic potential of a cell को alter कर सकते हैं. उसको like potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata depends on the turgor pressure of the
guard cells, right? So these osmotic potential of the guard cells can be changed by potassium. So potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. You may recall the role of minerals as solutes in determining the water potential of a cell. So role of minerals as solutes in determining the water potential of a cell. So water potential of a cell को determine करने के लिए role of minerals as solutes. रोल ऑफ मिनरल्स एज सोल्यूट्स इन डिटरमाइनिंग. सो वाटर पोटेंशियल किस में ज़्यादा रहता है? जिसमें पानी ज़्यादा रहता है उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, राइट. जिसमें पानी ज़्यादा उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा. जिसमें सोल्यूट कम जिसमें इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा. जिसमें सोल्यूट ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा कम. जिसमें सोल्यूट ज़्यादा उसमें वाटर पोटेंशियल कम. सो दिस इज़ वॉज ऑल अबाउट criteria for essentiality, and criteria for essentiality was given by Arnon and Stott. Now let us discuss the trick for remembering all these, how to remember. So the first thing is about macronutrients. These are required in large amounts, okay. So let's see the trick. This is CHON. CHON. How to remember? Chon, 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 ching chong pong. So this is Chinese word, you can take it as. So chon, this is carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. So these 4 elements chon, and इसमें से जो 3 elements हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, these 3 elements, this carbon, hydrogen, oxygen, these 3 elements are non-mineral macronutrients. Why they are called non-mineral? Because these are obtained from carbon dioxide and water. These are obtained from this carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Among that, these 3 carbon, hydrogen, oxygen obtained from carbon dioxide and water. देखो ना, कार्बन कहाँ है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में. ऑक्सीजन तो वाटर में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, एंड हाइड्रोजन. सो दीज आर कॉल्ड नॉन मिनरल मैक्रो एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये सॉइल में से अब्जॉर्ब नहीं होते. ये ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लाइक वाटर हमें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से, या फिर जब बारिश पड़ती है तो, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से, ठीक है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है. एंड नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फिक्सेस, राइट. एंड बैक्टीरिया इन द सॉइल फिक्सेस नाइट्रोजन. कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, इनको मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं. एक्सेप्ट ये 3 है ना, CHO. ये CHO नॉन मिनरल है, नॉन मिनरल. बाकी के सारे मिनरल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. ये जो है ना चॉन हो गया ना, चॉन, CAMG, कैल्शियम, मैग्नीशियम, PS, तो PS के, तो चॉन हो गया. चॉन CA का मैगी, MG इस मैगी, चॉन का मैगी. फॉस्फोरस, सल्फर, पार्सल करना, चॉन का मैगी पार्सल करना. चॉन चाइनीज़ बंदा है, ये बंदे को मैगी चाहिए, तो हमने इसको क्या बोल दिया? चॉन का मैगी पार्सल करना. ये के पोटेशियम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम. से हो गया चॉन का मैगी पार्सल करना. मैक्रो एलिमेंट्स, इसमें से बता दिया कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इन्हें नॉन मिनरल बोलते हैं, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल जाते हैं. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन मिनरल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. अब बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं. ये और फनी ट्रिक है, ये सुनने के बाद हंस पड़ोगे. तो आयरन मैन, Fe है ना, Fe क्या होता है? आयरन. Mn क्या होता है? मैंगनीज. तो आयरन मैन, तो जहाँ भी मैंगनीज आएगा इसको मैन ही बोलूँगी, तो आयरन मैन. कॉपर को क्यों? MO, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल. सो आयरन मैन क्यों? स्पाइडरमैन नहीं, आयरन मैन.
कॉपर का CuQ, MO मतलब मौत, Z मीन्स ज़िंदगी, बोरॉन बोर, राइट, बोरॉन क्या है, बोर कर निकला, निकल मीन्स निकला, तो क्लोरीन। सो आयरन मैन, क्यू मौत ज़िंदगी, बोर कर निकला, क्योंकि आयरन मैन फेमस नहीं हुआ, स्पाइडर मैन फेमस हो गया, तो ये अपनी मौत ज़िंदगी देख के भी बोर करके निकला, एंटरटेन नहीं कर पाया ना, इसलिए आयरन मैन फेमस नहीं है, स्पाइडर मैन फेमस है। ओके, एनीवेज दिस इज़ अ वेरी फनी ट्रिक एंड आई थिंक दिस ट्रिक इज़ हेल्पफुल। आपको अगर याद नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, और एल्स यू कैन, दिस विल हेल्प यू टू मेक योर ओन, टू क्रिएट योर ओन ट्रिक। So once again I will repeat, for macronutrients you can remember चौन का मैगी पार्सल करना, and for micronutrients आयरन मैन, क्यू मौत ज़िंदगी, बोर कर निकल, एंड जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ना उसकी ट्रिक है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, एसेंशियल एलिमेंट्स सॉरी एसेंशियल एलिमेंट्स मैक्रो एंड माइक्रो हैं, ये जो बेनिफिशियल एलिमेंट्स है ना इसकी ट्रिक होती है सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलेनियम। तो ये और वो फनी है, नासिकोसे, मेरे को इसका मतलब नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसको ऐसे याद रख लिया है कि नाकोसो, राइट, नासिकोसे। तो जब ये बेनिफिशियल एलिमेंट बोले नासिकोसे, ना मीन्स सोडियम Na, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम, नासिकोसे। सो ये मैंने अपने मुझे 1 दिन लग गए थे ये ट्रिक बनाने के लिए, लेकिन मैं ये ट्रिक से वो जो भी क्वेश्चंस आता है ना वो सॉल्व कर पाती हूँ। आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आपसे शेयर कर दिया, वैसे मुझे शेयर करना नहीं चाहिए था, बट कर दिया। आई एम वेरी गुड फ्रॉम हार्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो अपने वो भी देख लिया कि एसेंशियल एलिमेंट्स को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द डाइवर्स फंक्शंस एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मीन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स, दूसरा एनर्जी रिलेटेड, तीसरा एक्टिवेटिंग द एंजाइम्स और इनहिबिटिंग द एंजाइम्स, एंड फोर्थ वन ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बेसिस पे हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। Now let's talk about role of macro and micronutrients. Role of macro and micronutrients. Essential elements perform several functions. They participate. ये हम ना next video में करते हैं. So till then please consider subscribing my channel and share it with your friends and give your feedback in the comment section कि आपको मेरी explanation समझ में आती है कि नहीं. Is this video helpful for you? What should I do to improve it? ओके, सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करके ही जाना एंड लाइक तो कर ही देना प्लीज़, इतनी अच्छी ट्रिक जो दी है। ओके, थैंक यू।